So wherever you go in the ancient text of Sanatana, there is one clarity. Okay, clarity is like Vidya is of two kind, Paravidya and Aparavidya. Para is pare, beyond. The Vidya that cannot be described fully. You cannot explain the exact meaning or exact experience. You cannot explain in the terms of language. Okay, that is Paravidya. And Aparavidya, it can be expressed like what is written in Ved, what is written in Upanishad. So Ved Upanishad is again the not the ultimate truth, it is the pointers towards the truth. So let's say right now we have just knew that there is limitation of language. Okay, so logic, assertion, reasons, explanations, okay, rebuttals, these all comes under the language. And if language has some limitations, that's how the logic would also have some limitation. Okay, so something we are not seeing like it is very illogical, that doesn't mean कि ये हो नहीं सकता. It cannot be true. Okay. Namaste everyone. And let me tell you all, there are already 5 talks down the line, and I will be doing these talks in English. Already I have done in Sangam Talk Hindi channel. So today's talk is on Rishi's intelligence, the basis of Indic Renaissance. Let me share this slide first. You can see 6 Maharishis in the screen. And when we hear the word Rishi, immediately we think of a Purush, Mahapurush having long beard, Jata, doing yagya in forest, living in harmony even with animals, and mentors for the great kingdoms. And we can also say like they are the explorer scientist of our civilization. Just think of Ayurveda, discovered by Charaka, Shushrut, Maharshi Charak. Okay. And just think of if we don't have the knowledge of Ayurveda in the time of crisis in last 2 years, what would have been there? Okay. Kind of mismanagement. So I had this curiosity why we used to wear the thread, and we wear the thread Janeyu after Upnayan or Yagyopavit Sanskar. From there, we are constantly reminded that we have a depth, and not just the one kind of depth. If you have the 5 thread, there are 5 depth. Pitri Rin. Rin is literally depth. Guru Rin, Rishi Rin. So the knowledge that we know today, all our ancient sciences, just because of these ancient rishis. So we have the depth of this rishi. The first one is Maharishi Kanad, okay, who gave the Vaisheshika Darshan. Vaisheshik Darshan, you can say the physics, which also includes the observer. Similar to the sense in quantum physics, we include the perception of the observer also while analyzing the physics. Second one is the Maharishi Gautam, who gave the Nyaya Darshan. Nyaya is justice, Nyaya is Nirnay, Nyaya is decision making. So how we decide which is truth, which is not truthful, applying logic, going for the valid means of knowledge. We go and learn from Nyaya Darshan. Maharshi Kapil, who gave Sankhya Darshan. The most ancient darshana is the Sankhya Darshan. So when we read the Bhagavad Gita, the second chapter of Bhagavad Gita is all about Sankhya Darshan. Okay. And Sankhya Darshan is all about the evolutionary process, evolution of Brahmand, evolution of the Srishti. Fourth one is Maharishi Patanjali, who gave the Yoga Sutra. The yoga you know today that Ramdev Baba popularized it is the Hatha Yoga, not the Darshana, not the Yoga Darshan. Okay, Yoga Darshan is something different from what we know from Hatha Yoga. Maharshi Vedvyas, who gave the Vedanta Darshan. We hear a lot about Swami Vivekananda and the word Aham Brahmasmi. In social media, these
Memes are very popular. Aham Brahmasmi, we all are one. There is singularity, there is unity, there is no other two. Maharshi Raman Rishi. Okay. So that darshan is Vedanta darshan. And the sixth one is Maharishi Jaimini, who gave the Purva Mimamsa darshan. The all about the knowledge of Yagya. We perform the Karma Kand. Okay. These all understanding we understand from Purva Mimamsa darshan, Maharshi Jaimini. So wherever you go in the ancient text of Sanatana, there is one clarity. Okay. Clarity is like Vidya is of two kind, Paravidya and Aparavidya. Para is pare, beyond. The Vidya that cannot be described fully. You cannot explain the exact meaning or exact experience. You cannot explain in the terms of language. Okay, that is Paravidya. And Aparavidya, it can be expressed like what is written in Ved, what is written in Upanishad. So Ved Upanishad is again the not the ultimate truth, it is the pointers towards the truth. We all have the experience ki language ka kya limitation hai. Let's say I want to speak like आपने जो लास्ट टाइम गुलाब जामुन खाया था उसका स्वाद क्या है, टेस्ट क्या है. यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट फुली. यू विल गिव सम एनालॉजी या मेरे एक्सपीरियंस से आप कंपेयर करोगे. दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल डू, बट यू विल नेवर एक्सप्लेन. यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर होल एक्सपीरियंस of eating even a sweet. So how can you explain the knowledge about Paramatma or some very complex knowledge if you cannot explain simply the experience of eating a sweet? Okay. So dimension of experience will be different for everyone, and to get the exact knowledge, tattva gyan, the exact sense, that's how we use the word tattva. You have to go to the dimension of Paravidya. Okay. And it is written in the Mundok Upanishad 1.1.4. So let's say right now we have just knew that there is limitation of language. Okay. So logic, assertion, reasons, explanations, okay, rebuttals, these all comes under the language. And if language has some limitations, that's how the logic would also have some limitation. Okay. So something we are not seeing like it is very illogical, that doesn't mean ki ye ho nahi sakta. It cannot be true. Okay. Because you cannot explain every reality, every truth just by using the language. Okay. So let's stick to the dimension of language this time. So Vad, Jalpa, Vitanda. We all have heard the word Sastrarth, Vad and Vivad, the debate competition. Okay. So what is Vad? When two persons are involving in a topic, and both people are down to earth and they have some curiosity to get something new or update themselves. They are not in the ego clash that I want to win this argument, I have the better data, I have the better argument. You are doing Jalp, you are not doing the Vad, because you don't have the curiosity to learn something new. You are not respecting the point of view of the other person, the Purva Paksha, you are the Uttara Paksha. And the Vitanda, a person is saying, I have the authority to say that thing. You don't have the authority to say that particular thing. You cannot even know the language. You are not literally having the degree of that particular subject. How can you debate with me? So Vitanda is like allegation, putting allegation and not involving people in the actual conversation, actual Vad. Okay. So in TV news debate, we see Vitanda and Jalp all the time. Okay. That's why both the people don't learn something new, because they are not following the rules of Nyaya Darshan. These Vad, Jalpa, Vitanda will come under the Nyaya Darshan. Okay. Now, getting the knowledge, how to get the knowledge in a very good sense. There is a slok in Yoga Darshan, Shraddha, Virya, Smriti. The three word is there, Shraddha. Very established, firm belief is called Shraddha.
So you were in college, and let's say you were sitting in the class of physics. Now, have you ever doubt the subject physics or the professor कि ये subject पे मुझे विश्वास नहीं है, ये professor पे मुझे विश्वास नहीं है? Okay, the first step to learn something new, you should have the curiosity, you should have the श्रद्धा. अभी हमारा जो पूरा यूथ या कहे या पूरा जनरेशन क्या है, इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते हैं? वी डाउट एवरीथिंग, इवन वी डाउट दी वो टेक्स्ट रियल है कि नहीं, उसका हिस्टोरिसिटी क्या है. आई इवन डाउट कि ऐसा हुआ होगा, रामायण हुआ कि नहीं. आई डाउट थिंग्स, तो मुझे पहले प्रूफ दो. ओके, तो वो इस मोड में है कि पहले वो एक एक टॉलरेट ही नहीं कर रहा. ही इज नॉट अलाउइंग समथिंग न्यू टू बी एक्सेप्टेड बाय हिज ब्रेन, बिकॉज ही or she don't have the word shraddha, very excitement. Okay, we all know that we have the memory of our lifetime. In the moment we have the high octane. Okay, we remember the memories जो हमें बहुत अच्छा लगा होगा. Okay, if you don't have the excitement to learn something new, it would not create smriti, the third part, the memory. And if you don't have the memory, you don't have the more number of dots. And if you don't have more number of dots, how can you connect the dots? If you are connecting the dots with very few dots, you will reach to a very bad conclusion. तो अभी हमारा एक मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि we too much rely on the memes, we too much rely on the one liner logic. हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डेप्थ में हमने समझने की कोशिश नहीं की है. So these have some problem. I must say कि एक issue जो हम logic में देखते हैं, like two people are discussing, okay, fan is moving or not. So one person is saying, I'm not getting the air, wind blow, and other person is saying, okay, I'm also not getting the sound of the fan. That's why fan is not moving. So they have some pre-assumptions, and on the basis of pre-assumption, the logic follows and we reach to the bad conclusion. Simply they should have observed the fan for longer period of time और उनका सारा क्लैरिटी हो जाती. यहां पर लॉजिक का रिक्वायरमेंट नहीं था. देयर इज प्रत्यक्ष प्रमाण. ओके, द प्रमाण, द वैलिड मीन्स ऑफ नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन द वर्तमान काल. वर्तमान काल में जो हम परसीव करते हैं, द नॉलेज वी गेट फ्रॉम आई, ईयर, नोज, टच, टंग, ये सारा क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण. And there is another praman, anuman praman. Now let me clarify what is anuman praman. Anuman praman is not the guess. Okay, we all are seeing like sun is rising in the east और वो move कर रहा है, but literally we are not seeing the movement of the sun. We are just comparing कि हमने एक बच्चे को देखा है, the child is riding a bicycle, and when the bicycle moves, there is displacement. So if there is displacement, there is movement. So we see the change of position of the sun at different point of time in daytime. That's how we realize कि sun का एक movement होगा. That is the anuman. Anuman is using some cognitive skill set and experience of some pratyaksha praman is there in your past. Okay, so anuman is in present moment, also in the past, and again in the future. So what we are doing, the graph analysis, हम data analyze करते हैं, graph करते हैं, forecast करते हैं weather का, सारा क्या है? These all are अनुमान प्रमाण. These are not a wild guess. Okay, this is the guess based on some past repetitive events जिसका कुछ pattern है. Okay, now there is a sense कि एक YOLO word आता है, you only live once, तो यही एक life है, तो हमें जो करना है इसी life में करना है. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस वी कॉल इट प्रत्यक्ष प्रमाण. ओके, नाउ द साइंस, इन द साइंस मेनी थिंग्स वी डोंट रियली सी. ओके, लाइक इलेक्ट्रॉन, टिल नाउ वी कांट सी इलेक्ट्रॉन. ओके, we have realized from the cathode ray experiment and other properties, physical chemical properties, कि there is some fundamental particle, and that is the anuman praman. Okay, so anuman praman is the basis of exploration of this science. हम एक hypothesis बनाते हैं, फिर उसमें न्याय को लगाते हैं, logics को लगाते हैं, and then we reach to the conclusion.
So even only with pratyaksh praman we can't have the sciences. Okay, so pratyaksh praman is already the incomplete, and anuman praman has the association of प्रत्यक्ष प्रमाण. तो जिसका हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते. Okay, if we haven't seen the Paramatma, if we haven't seen something unexperienced, तो उसका guess भी करना, calculated guess करना is not possible. Okay, so you can see the limitation of word. Now the limitation of your experience is also there. So what we have to do now, we all have observed our awareness level in the coma, in the anesthesia, in the waking, dreaming, sleeping. And even if we are sitting in the class and thinking about something else, not focusing on the subject, we will not get the things. Okay. So just because there is some knowledge in front of you, not a threshold level of awareness level. So because we are the observer, we are getting the knowledge, we have to aware, we are as an instrument, we want to calibrate the instrument precisely so that we will get the real results. So what is the framework of getting the knowledge? Okay, we want to understand people, we want to understand the situation, and we all have the curiosity to understand this thing. So what is the framework that rishis have given us? Yatha pinde tatha brahmande. Whatever in the pind, it is in the universe, and whatever in the universe, it is in the pind in you. Okay, so if you can understand yourself, you can understand all of the thing. Okay, so दिस इज द फ्रेमवर्क कि दूसरे को समझने से पहले, दूसरे सब्जेक्ट को समझने से पहले, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, वी हैव टू रेज आवर अवेयरनेस लेवल. और अवेयरनेस लेवल बढ़ाने से क्या होगा एंड हाउ थिंग्स विल गो ऑन. श्रवणम मननम निदिध्यासनम. श्रवणम, वी से कि हमारा लिसनिंग पावर है, बट वी लिव इन दी कुछ वेट फॉर आवर टर्म कि हम, मेरे पास एक लॉजिक है, आई विल से समथिंग एंड आई विल गिव द रिब्यूटल. मैं उसके भी इस लॉजिक को काटता हूं. आई एम नॉट एक्चुअली लिसनिंग. ओके, जो कहा जा रहा है उसे हम सुन भी नहीं रहे हैं ठीक से, एंड देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड माय माइंड. सो श्रवणम ही मेरा ठीक नहीं है. ओके, अवेयरनेस लेवल जब रेज होगा तो सबसे पहला रिजल्ट क्या आएगा? श्रवणम इज देयर. मननम, नाउ इन आवर एजुकेशन सिस्टम वी आर लिटरली taught to pass in the exams. We don't do mananam, meditate repeatedly. हम thoughts को बार बार नहीं सोचते हैं. Okay, like, so scientific temperament कैसे develop होगा? How to do that scientific temperament if we are not thinking repeatedly, if we are not have a list of doubts, what we have listened, what we have done in the shravanam part. So mananam is like, आपने भगवत गीता सुना है, you have listened भगवत गीता, but उस श्लोक पे बार बार रिपीटेडली आपने उसको पोस्टमार्टम नहीं किया. मननम इज नॉट देयर. सो रियलाइज एसिमुलेशन कैसे होगा? यू विल नॉट सी द इफेक्ट इन योर दिनचर्या, इन योर लाइफ रूटीन, बिकॉज मननम इज नॉट देयर. एंड अगेन श्रवणम वाज नॉट देयर प्योरली because your awareness level was not there. So Vedanta darshan is literally telling us कि Jagrat, Nidra, Shushupti, there is the fourth, the highest awareness level is there in the Turiya stage. And of course, we will not discuss today what is Turiya, because each darshana will take like 100 sessions to understand or grasp what is being said in the text. Now, Vaisheshika darshana. Now you see, there are 9 dravya in Vaisheshik darshana. Dravya is literally the substance in chemistry. And in chemistry, substance is something that can be modified, that can be transformed. Okay, so on the right side you can see the akash, dik, space, kal, time, atma, and mana. So man and atma both are two different things, and these all are dravya. So space and time can also be the time dilation, curl. Okay,
मन परिवर्तन, these all are modifiable. ठीक है. So Vaisheshik Darshan is the physics part, which our rishis, the Kanad Rishi gave us, and again the अणु वायु तेजस अपस पृथ्वी जो हम पंच महाभूत कहते हैं, that the four भूत इधर है and आकाश is the पंचभूत. So वैशेषिक दर्शन is telling like कि आत्मा is there, ये डिबेट नहीं कर रहा है कि आत्मा होता है कि नहीं होता है. It literally telling us कि there are 9 द्रव्यास in वैशेषिक, and if it is a द्रव्य you can testify it because we are learning it is in physics. Okay, हम philosophy पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. It literally एक सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है. एंड स्पेस एंड टाइम भी मॉडिफाई हो सकता है जस्ट बिकॉज कि हम यहां देख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ही है इसका द्रव्य. नाउ आई हैव पुट दिस श्लोका जस्ट टू गिव यू द क्यूरियोसिटी कि हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म, देयर इज ऑल्सो materialistic behavior. Now, this shloka has meaning ki in absence of force, there is no upward motion, sideward motion, or motion in general. Okay. So, literally, it sounds like some second law of Newton's motion. Okay. So, cause and effect, karya karan siddhant is there in Vaisheshik Darshan, the physics part, and literally we are giving credit to Newton कि उसने जो है Newton's जो 3 law दिया, and our ancient rishis have already understood it कि कैसे motion का क्या कोई reason है. If there is no force, there would not be any motion in general. Okay. Now the Sankhya Darshana. Okay, the 6 Darshana were there in the first slide. हमने discuss किया है. So Sankhya Darshan you will hear in Bhagavad Gita, the 2nd chapter of Bhagavad Gita. And just one point I want to discuss. ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक flow chart दिख रहा है. There is word Mahat in the 3rd stage. Mahat word is there, and in the last stage there is Panch Mahabhuta, आकाश वायु तेजस अपस पृथ्वी, जो हम हिंदी में कहते हैं जल अग्नि वायु पृथ्वी तत्व आकाश तत्व. So in the process of evolution, this is the chart of the evolution. Okay. At the end of the evolution, you are seeing the material realization, the atoms, molecules, Panch Mahabhut. At the end of evolution, the observable universe, जो हम अपने sense organ से समझते हैं, वो सबसे end part है. Third part is Mahat. Mahat is called intelligence. Okay. So ये थोड़ा contradictory है आज के sense में. What we understand about intelligence कि okay, evolution कैसे हुआ कि there were amino acids, clouds था, clouds के बाद फिर planets बने, stars बने, फिर छोटे छोटे planets बने, फिर livable conditions were there, temperature, pressure आया, फिर water molecules आए, water आए, फिर single cell organism, फिर इवोल्यूशन होते होते एनिमल्स, प्लांट्स, एंड फिर ह्यूमन. हम कहते हैं एवोल्यूशन के एंड में ह्यूमन, जिसका ब्रेन है एंड ही कैन कॉन्टेम्पलेट थिंग्स, ही कैन क्रिटिकली थिंक, एनालाइज, ही कैन इवन द एवोल्यूशन. ओके, बट हियर यू कैन सी कि इंटेलिजेंस बहुत पहले आ चुका था. इट्स नॉट कि ब्रेन होना जरूरी है इंटेलिजेंस के लिए. नाउ दिस फ्लो चार्ट विल एक्सप्लेन यू कि हाउ अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी ब्रेन डज इट्स एक्टिविटी. अभी के साइंस में हम कहते हैं देयर इज सम रैंडमनेस, देयर इज सम लिविंग इंस्टिंक्ट. इवोल्यूशन का एक इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल का एक इंस्टिंक्ट है, उसके लिए सब कुछ हो रहा है, उसको फॉलो सब कर रहा है. बट ये जो साइंस है वो मेटेरियल एस्पेक्ट को पहले देखता है कि देयर इज हिग्स बोसोन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल आर देयर, फंडामेंटल पार्टिकल्स से दिस यूनिवर्स इज बीइंग मेड. But in Sankhya Darshana, we see it is the last part of the evolution. Okay, the evolutionary part that we can sense with our organs, sense organs from instrument. We cannot sense Sattva, Raj, Tam. We cannot sense these Mahat Tattva. But intelligence, cosmic intelligence, was there in the beginning of the evolutionary process. And after the cosmic intelligence, the collective intelligence, there is the word Ahankar. अहंकार is not the bad word. Excess of अहंकार is what we see कि रावण में बहुत अहंकार हो गया था. बहुत अहंकार होना is very bad thing. But अहंकार, if you don't have the अहंकार, you cannot have the sense of ownership that you are doing the things. Okay.
भक्ति मार्ग में इसी को हम लोग डाइल्यूट करने बोलते हैं कि अहंकार को जब वी डू द डाइल्यूशन, कि गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स, लीला है भगवान की, तो इस अहंकार को आप डाइल्यूट करते हैं टू अंडरस्टैंड द परमात्मा। बट अहंकार इज द इंडिविजुअलिटी आफ्टर द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कि यू एंड आई बोथ आर डिफरेंट। Okay, these stone, this plants, these are the diversities, but we all are not the same. We have some kind of ownership. That feeling is coming from ahankar. So these kind of understanding, the evolutionary understanding, the srishti nirman, we get from sankhya darshana. And we say pragyanam brahma, gyan hi brahma hai. This is one of the mahavakya of our veda. You have heard about aham brahmasmi, but gyan hi brahma hai. द क्यूरियोसिटी टू नो एवरीथिंग, कि हमें और एक्सप्लोर करना है, ये क्यूरियोसिटी आती कहां से है, ये किसकी क्यूरियोसिटी है? ओके, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म की ही क्यूरियोसिटी है। यू सी कि देयर इज सम होलोकॉस्ट, एटम बम, न्यूक्लियर बम आ जाए एंड देयर इज एनहिलेशन ऑफ, पूरा सब लोग मर जाए, पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, तो नॉलेज ऑफ बिल्डिंग ए स्मार्टफोन ये किसे आएगा? No one will able, no creature will able to make a smartphone. The knowledge of smartphone will be lost if we are lost. We are, हम मर गए अगर, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा में। So हम यहाँ कहते हैं कि ये इनवोल्यूशन हो जाएगा। If there is no evolution, तो वो जो नॉलेज है, नॉलेज टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वो भी गायब हो जा रहा है। ओके, सो इवोल्यूशन में भी हमारा ज्ञान का जो एक्सपेंशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, और ये जो इसका जो सोर्स है उसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो ज्ञान ही ब्रह्म है। दैट वर्ड, दिस इज बीइंग कैरिड इन द वर्ड भारत। भारत, भारत, ज्ञान में जो रमे हुए हैं, दोज हु आर सीकर्स, भूखे हैं, थ्रस्ट फॉर द नॉलेज, आर कॉल्ड भारतीय, जो ज्ञान में ज्यादा मजा लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द भारत। नाउ वी हैव seen the limitation of language, limitation of our language experiences, limitation of nyaya, logic, and many more things. So what to do? So what is the methodology to get the tattva gyan? Okay, then comes yoga sutra. The definition of yoga is yoga chitta vritti nirodha, that's all. That is the definition of योग। ओके, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, सेसेशन ऑफ द नॉइजेस, डिस्टर्बेंस ऑफ योर चित्त। चित्त, आप बुद्धि, मन, अहंकार, इनके कॉम्बिनेशन को यू कैन से चित्त। आपकी इंटेलिजेंस, आपका माइंड एंड आपका सेंस ऑफ ओनरशिप, ईगो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को वी से चित्त। जो चित्त का डिस्टर्बेंस, इफ देयर इज सम सेसेशन, यू आर इन योग। ओके, सो अष्टांग मार्ग में वी डू यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दिस इज द 8 limbs of yoga, and what we achieve, we neutralize our buddhi, man and ego. Okay, we neutralize because senses have some limitation, and we want to know the reality, we want to know the tattva gyan, so we have to go for some better instrument, some better methodology, so we have to neutralize these all senses. तो गुफा में, केव में जो कोई साधना में बैठा हुआ है, you literally see he is inside the cave. Okay, उसे विंड का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है, ही इज नॉट टेलिंग एनीथिंग, शब्द इज नॉट देयर, ही इज नॉट लिसनिंग एनीथिंग बिकॉज वो बहुत डीप केव में है, ही इज नॉट सीइंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई आईज आर क्लोज्ड। ब्रीथिंग होगा तभी वो लाइवली होगा, वो जिंदा होगा, तो ब्रीथिंग एक कंटिन्यू होता है, बट 4 सेंसेस ऑर्गन को ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया जा चुका है, एंड एट द लेटर स्टेज इवन ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेरी स्लो। ओके, सो ये जो क्यूरियोसिटी है कि ये भगवान बुद्ध को कह रहे हैं कि ये पीपल पेड़ के नीचे बैठे तो ज्ञान मिल गया, मतलब आई हैड दिस क्यूरियोसिटी बचपन से कि देयर इज नो प्रोफेसर, देयर इज नो बुक, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द ज्ञान, मतलब ज्ञान है क्या, मतलब ये नॉलेज मिला क्या, बैठे बैठे क्या मिल गया। सो जब पढ़ के जो मिलता है, सुन के जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड विज्ञान।
that is called science. Science can be explained, okay, can be testified, can be verified. Gyan can only be experienced, and experienced after the cessation of the buddhi. Now this is something very paradoxical कि बुद्धि को ही सेसेस कर दो तो फिर कैसे समझ में आएगा. But if we see the flow chart of the Sankhya Darshana, Mahat is called Buddhi, and Buddhi is after Purush and Prakriti. अभी के लिए पुरुष को आप शिव समझ सकते हो, शिव तत्व, एंड प्रकृति को शक्ति तत्व. तो पुरुष शिव और शक्ति को समझने के लिए बुद्धि कैपेबल है, बिकॉज इट इज आफ्टर देम इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस. तो विच इज समथिंग बियॉन्ड, बुद्धि के जो बियॉन्ड है, ठीक है, उसे बुद्धि नहीं समझ सकती है. ओके, सो लॉजिक से, एक्सप्लेनेशन से, टीचिंग से, इट इज काइंड ऑफ अ पॉइंटर ओनली कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि गो फॉर द एक्सपीरियंस पार्ट, गो फॉर द experiencing the gyan part. Few months ago, I asked a person of my age ki what is the contribution of India in mathematics. भारत का क्या contribution है mathematics में? So with a laugh, sarcastically he said zero, शून्य. He was not telling कि वो zero digit हमने दिया है. There is no contribution of mathematics. So one shlok is there in your screen, and it is being published in Yukti Deepika by KV Sharma, and let me show the translation. Okay, this is the just the English translation. Okay, this video will be uploaded in the YouTube. You can see there with a pause. आप pause करके इसको आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है. Now this is the translation in the mathematical term, and this goes like at the end sine theta infinite series expression. Okay, infinite series, that means calculus is coming. Okay, calculus, and calculus is one of the most developed part of mathematics. हम बोलते हैं arithmetic, number system, algebra, trigonometry, and calculus. And calculus is the bridge between science and engineering. If there is no calculus, if there is no infinite series, you don't have the engineering as a subject. Science रह जाता, and सिर्फ वो दर्शन रह जाता, सिर्फ वो फिलॉसफी रह जाता. इंजीनियरिंग में वी गेट द बेनिफिट ऑफ दिस साइंस, एंड दैट ब्रिज इज बीइंग मेड बाय दिस इन्फिनिट सीरीज. सो यू कैन सी देयर इज अ संस्कृत श्लोक इन द फॉर्म ऑफ अ श्लोक which can be converted into an infinite series, and infinite series is much more advanced form of mathematics. So it is not कि zero बस हमने दिया है, arithmetic calculation हमने थोड़ा geometry दे दी, because हम temples बना रहे थे तो geometry तो हमें आएगी ही बहुत अच्छे से, वास्तु हमें आती है, there is ज्योतिष part, so astronomical calculations हम कर रहे हैं तो वो mathematics हमें आती थी. Not just that, calculus भी हमें आ रही है, ठीक है. And you can see calculus होता क्या है, अगर if in a crude sense, जो अनभिज्ञ है इस सब्जेक्ट से, कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ द चेंज. देयर इज चेंज इन एवरीथिंग. ओके, बहुत चीज बदल रही है. इफ वी एनालाइज द चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, लाइक स्पीड का चेंज हम बोलते हैं, वेलोसिटी के चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन के चेंज को हम बोलते हैं जर्क. ओके, सो फिजिक्स में एनालिसिस ऑफ चेंज इज देयर. इफ समथिंग इज चेंजिंग, देन वी कैन ओनली रियलाइज. ना, जो चेंज नहीं हो रहा है उसे हम पकड़ भी नहीं सकते. ओके, दैट्स हाउ परमात्मा और आत्मा को ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट और वो पकड़ नहीं पाता है, बिकॉज देयर इज नो चेंज. इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर करेगा इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस? इवन हार्ट बीट भी हम देखते हैं तो वो उसमें क्रेस्ट्रॉ चेंजेस दिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि पर्सन इज अलाइव. इफ देयर इज नो चेंज, वी कैन नॉट से कि पर्सन इज लाइव और अलाइव, मतलब डेड. अगर इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए और कोई चेंज नहीं मेजर कर पा रहा है तो we cannot say anything. So in Yog Sutra there is another shloka, Parinamatraya Sanyamad Atit Anagat Jnanam, and Parinam word is the change, analysis of the change, and Sanyam is the last part of Ashtanga Yoga, Dharana, Dhyan, Samadhi. Dharana, जो अर्जुन को हम देखते हैं महाभारत में, he is focusing on the eye of the bird, eye of the bird. This is called dharana. If that dharana
is for prolonged period, not for 2 minutes, 4 minutes, but 4 hours, 4 days, 4 months. We call it dhyan. Okay, dhyan is something prolonged धारणा. एक बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है, वो धारणा से पढ़ता है. Okay, it's focus is धारणा. ध्यान is something बहुत prolonged धारणा. And when we have the realization कि there is no difference between the object and the subject or the observer, we say कि समाधि हो गई है. If there is no difference between the bird's eye and मेरे में या अर्जुना में, then we say समाधि. ये थोड़ा सा paradoxical, out of the sense, out of the context is literally sounding, but मैंने कहा कि language has some limitation. So संयम, when we do संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि of anything, ये तीनों, ये त्रय वर्ड यहां पर है. If we can do धारणा, ध्यान, समाधि सामने वाले के बिहेवियर का, सामने वाले के संस्कार का, we can know the पूर्व जाति ज्ञान, उसके पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है. डिबेट नहीं हो रही है कि देयर इज अदर लाइफ फॉर्म्स, होता है कि नहीं होता है, आत्मा होती है कि नहीं होती है. इफ देयर इज प्रत्यक्ष प्रमाण, इफ यू नो द थिंग्स, एंड हाउ टू नो द थिंग्स, अगेन द योग सूत्र. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग द चेंज. ओके, ग्राफ में भी हम चेंज को ही एनालाइज करके प्रेडिक्ट करते हैं कि अब ये होने वाला है. सो दिस इज द वे a person or yogi is literally reading your mind, literally telling about your past, literally telling what will happen. He is just doing dharana, dhyan, samadhi, parinam traya sanyamat. Okay, and our senses are only present in this moment. ये जो हमारा सेंस ऑर्गन है, ये बस वर्तमान में होता है, हमने पहले भी कहा था. And our मन is त्रिकालदर्शी. So literally जो सॉन्ग था जिसका मीनिंग हमने कभी कॉन्टेम्पलेट नहीं किया कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. सो मन इज लिटरली त्रिकालदर्शी. मन कैन कॉन्टेम्पलेट थिंग्स इन डायमेंशन ऑफ टाइम, पास्ट में और प्रेजेंट में. ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो दर्शन शास्त्र में एक्सप्लेन किए हुए हैं. और यहां पर कोई ओपिनियंस नहीं दिया जा रहा है, यहां पर कोई सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जा रही है. लिटरली एक साइंस को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, जो वर्ड्स से, हाइपोथेसिस से, एक्सप्लेनेशन से दे आर इनकैपेबल टू बी रियलाइज्ड. एंड अगेन मन इज दी वैशेषिक. जहां हम मन लगाते हैं हम वैसे बन सकते हैं. तो नाम रूप जप जो हम कहते हैं, रुद्राक्ष में नाम हमने जपा, भगवान राम का नाम लिया, भक्ति मार्ग रिपीट कर रहे हैं, तो हम मन को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं. सो बिफोर सेसेशन इवेंट, सेसेशन जो हमने योग सूत्र में देखा कि जीरो होने से अच्छा है या आसान है, पहले अटैच आवर सेल्फ टू वन एंटिटी. एक साइंटिस्ट में वैराग्य क्यों आ जाता है, बहुत सारे साइंटिस्टों में ऐसा है कि क्योंकि उसका जो एकाग्रता है, द फोकस है, वो इतना डेप्थ में होता है कि मन उसका उसी में लगा रहता है और ऑटोमेटिकली उसमें वैराग्य आ जाता है. सो मन को हम जिधर लगाने का प्रयास करते हैं, जहां हमारे नेबर्स कौन है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कौन है, तो हमारा मन का मॉडिफिकेशंस वैसा होते जाता है. नाउ दिस इज द पिक ऑफ replica of the Samudra Manthan in Thailand, and we all know this story of the Samudra Manthan. पुराण में, जो विष्णु पुराण में बहुत अच्छे से कहानी दी हुई है कि fight between Devata and Asura, and Mandar Parvat is there, and Vasuki Sat is being used as a rope, and churning of the Kshir Sagar, okay, the churning of the ocean, and बहुत सारे गिफ्ट्स निकल कर आते हैं. उसमें 14 गिफ्ट्स आर देयर, एंड भगवान विष्णु को आना पड़ता है, एंड लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो कमिंग देयर. सो any knowledge has some literal meaning, have some meaning coming from the etymology, epistemology, grammar, and there is some meaning from the point of view of darshan shastra, and the third meaning in the terms of historicity, कि past में इसका एक meaning रहा होगा, क्या meaning है. So anything you know or experience has kind of 2 or 3 dimensions of the perception कि क्या हम knowledge को grasp कर रहे हैं. So this is the story.
नाउ व्हाट इज द दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू? दर्शन शास्त्र को पढ़ने के बाद हम यहां से क्या समझते हैं? ओके, सो मंदार पर्वत इज देयर, देयर इज अ वेरी बिग माउंटेन, मंदार पर्वत. Our दृढ़ निश्चय, our strong conviction, okay, our strong conviction for self या explore new things. लेकिन ये conviction बहुत डगमगाता है. तो there is विष्णु coming in the form of tortoise, हम कहते हैं कच्छा अवतार में आते हैं, and holding the मंदार पर्वत literally on his above his body. Now Kachapa, you see, when Kachapa feels any disturbance or any डर वो महसूस अगर करता है, सो लिटरली ही पुल्स बैक द ऑर्गन्स इनटू हिमसेल्फ. ओके, सो इट इज कॉल्ड प्रत्याहार इन टर्म्स ऑफ योग दर्शन. प्रत्याहार, when we hear something we immediately react. Okay, if we can have a pause we can respond better. Okay, so to judge or to analyze or to observe particular situation statement we have some तटस्थता. ये आईएएस के प्रिपरेशंस में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन्हें बताया जाता है कि सिस्टम को समझने के लिए तटस्थता होनी चाहिए, थोड़ा सा उस सिचुएशन से अपने आप को दूर करते हैं. तो सेंस ऑर्गन का हमको यूज नहीं करना है व्हेन वी हैव इन द इनिशियल स्टेजेस, व्हेन वी हैव द स्ट्रांग कन्विक्शन. तो सेंस ऑर्गन्स को हम जब पुल करते हैं तो हमारा कन्विक्शन प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, ये डगमगाएगा नहीं कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, फिर हमने यहाँ पर कुछ रीड किया तो हमारा फिर माइंड बदल गया. नाउ वासुकी सरफ इज द रीइंकार्नेशन ऑफ पतंजलि योग. Patanjali, Maharshi Patanjali. So it is literally the yoga that can hold your conviction. Sankhya Darshan, Vedanta Darshan, Vaisheshik Darshan, these all are theoretical aspect. But yoga is Atha Yoga Anushasanam. Yoga is not the theory. You have to practice it. When you practice the yoga, you can hold conviction. Churning continue होती है. ठीक है? तो मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और चर्निंग किनके बीच में हो रही है? ये सात्विक एंड राजसिक दी देवता एंड सात्विक एंड तामसिक आदि असुर. ठीक है, इसी तीन जो गुण हैं इससे हम बने हुए हैं. सो इन दोनों के चर्निंग से जब हम करते हैं योग के हेल्प से, वी गेट द पॉइजन. हम जब इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं वी गेट द पॉइजन एंड द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग दैट पॉइजन किसमें है? लॉर्ड शिवा में. नाउ फ्रॉम द वेदांत दर्शन वी सी शिवो अहम, शिवो अहम. वी ऑल आर डिवाइन बट वी आर नॉट रियलाइजिंग द डिवाइन. उपनिषद में शब्द आता है कि भगवान सृष्टि बनते हैं और बनाते हैं. ये जो बना है सृष्टि, ये बना रहे भगवान, बट ये जो सृष्टि दिख रही है ये भी है भगवान. दैट्स वाई हम पत्थर को भी पूज रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर लिटरली चर्निंग करने में जो विश को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है, इफ वी हैव अवेयरनेस लेवल, इफ वी आर रियलाइजिंग कि वी आर द शिवा, वी हैव द अंश ऑफ शिवा, देन वी कैन लिटरली होल्ड दैट पॉइजन विद द हेल्प ऑफ शक्ति. ओके, एंड दैट इज द आध्यात्मिक पावर, है ना. जब होल्ड करने की कैपेसिटी हमें आध्यात्मिक पावर दी. एंड द गिफ्ट्स यू कैन कैटेगराइज इट इन धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. रंभा इज देयर, काम, कामधेनु इज देयर, अर्थ, dharma is there. Okay, lord goddess Lakshmi is there, parijat tree is there. Okay, and at the end dhanvantari, you can say the founder of Ayurveda, coming at the end with a pot holding the amrita. So the fourth and the end of our purushartha chatushtaya is the moksha. So mukti is the amrit. So that is the darshanik explanation of the Samudra Manthan. Okay, so Puran was written in the terms of like कि ये जनरल पब्लिक को ये स्टोरी मेमोराइज हो जाए. ओके, बट स्टोरी मेमोराइज अगर नहीं होगी तो बाद में हम कॉन्टेम्पलेशन कैसे करेंगे? सो पुराण इज लाइक कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस जब लो होता गया पूरी सोसाइटी का, तो वेद से हम पुराण में शिफ्ट हुए. ओके, एंड देन एट द एंड ये मंदिर आया फिर, बिकॉज हमारे गुरुओं ने समझा कि वी आर नॉट कैपेबल कि हम खुद से रियलाइज कर लेंगे. जस्ट रीडिंग भगवत गीता, ज्ञान मार्ग जो है सूट नहीं करेगा हमारे लिए. एंड भक्ति मूवमेंट इज देयर कि भक्ति मार्ग जो है इट इज फॉर द कॉमन पीपल
and it is much more easier. So this is all about जो आज मुझे डिस्कस करना था, the basis of our भारतीय renaissance, पुनर्जागरण of भारत is the darshan shastra, the न्याय दर्शन, how to debate, how to communicate with people, just speaking well your language, your English language or in your Hindi, जो भी language है, it is not the communication skill set. Okay, you have to say and you have some persuasive or conviction. Okay, and that is coming from the Nyaya Darshan. Not you are not doing Vitanda or Jalpa. And how to achieve that? How to raise your awareness level? With the help of yoga. And what is the एक सिचुएशन आता है जब हम बहुत परेशान होते हैं. So when we have the understanding of Sankhya Darshan, the nirman of Srishti, we think like we are the very small, tiny part in this big universe. So immediately our ahankar becomes neutralized, and the Vedanta Darshan realize we all are one. So this is all about जो मुझे आज डिस्कस करना था. Thank you so much. Very nice talk and very informative. So I have one question that what is the impact of food on the mana? I must say the sattva rajatam, sattvic, rajasic, tamasic, these are the fundamental particles of the universe. हमारे evolution process में इसको थोड़ा सा मैं explain कर देता हूँ, यहां से फिर ये food पर आ जाएगा. Because food, if it is sattvic, it has effect on our mind. ये है क्योंकि हर चीज जो है these fundamental particles से बना है. Okay, so तामसिक वर्ड अगर वर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं जड़ता. जो पत्थर है वो है तमस. कोई अगर लेटा हुआ है बेड पे, उसको और कुछ करने का मन नहीं करना, ही इज फीलिंग लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज तमा. राजसिक इज वेरी मच कंफ्यूज्ड, ये करना है वो करना है, वेरी मच एक्टिव, बहुत कुछ एक्टिव करना है, मतलब काम करना है, ये करना है वो करना है. एंड दी सात्विक प्योरिटी, ट्रांसपेरेंस, लाइट, प्रकाश जो हम कहते हैं. सो अगर बेसिक सेंस में हम कहते हैं तो सत्व रजतम ये है. तो फूड भी जिस कॉम्पोजिशन में बना होगा, इफ फूड इज फुल ऑफ सात्विकता, घी इज देयर, कर्ड इज देयर, ओके, तो इट हैज कैपेबिलिटी टू रेज द फंडामेंटल पार्टिकल्स सत्व इन अस. हमारे में सात्विकता वो बढ़ाता है. जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था. मैं नॉनवेज रहा हूं, हमेशा से रहा हूं, बट जब से मैंने योग किया, जब से स्वाध्याय ग्रंथों का प्रारंभ किया, तो जो क्रेविंग है, जो मर रहा था खाने के लिए, वो अब नहीं इंटरेस्ट रहा कि अब उससे नहीं खाना है. तो जो सात्विकता बढ़ रही है तो फूड का इंटरेस्ट भी मेरा बदल जा रहा है. तो ये रिवर्स भी काम करेगा कि फूड अगर सात्विक है तो हमारा मन भी सात्विक होगा. जैसे आपने बोला कि जहां पिंड वहां ब्रह्म, तो इसमें हम किसी भी फूड का शुद्धता और अशुद्धता को कैसे परिमाणित करेंगे फिर? ओके, शुद्धता अशुद्ध, या वी आर नॉट, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया शुद्ध अशुद्ध, मैंने जस्ट कहा कि सात्विकता से भरा होगा तो आपका सेसेशन होगा, ये सेंस ऑर्गन्स का, आपकी एक्टिविटी घटेगी, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा. ठीक है, मैंने ये वर्ड कहा कि परमात्मा के रियलाइजेशन में अगर सात्विकता है आपके पास, तो आप ट्रू सेल्फ को जानने के लिए इजीली उस पाथ पे मूव करोगे. ये हमारे सोसाइटी में डिसाइड किया गया है, शुद्ध और अशुद्ध, और रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं. दर्शन शास्त्र ऐसे वर्ड को यूज नहीं कर रहा है. ओके, अगर आप एनिमल इंस्टिंक्ट की ओर बढ़ना चाहते हैं, मतलब तामसिक भोजन आप अगर करते हैं, तो आप में एनिमल इंस्टिंक्ट बढ़ती है कि नहीं, मुझे फूड से सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मुझे प्रॉपर्टी से सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मेरा ये इलाका है, मुझे उससे लड़ना है. दीज ऑल आर एनिमल इंस्टिंक्ट. तो जो हम एवोल्यूशन में बोल रहे हैं डिविनिटी की ओर हमें जाना है, तो हम ऐसे फूड्स को ना पकड़े कि हमारा वो पाथ को प्रोलॉन्ग कर दे, हमें और लंबा जाना पड़ जाए. तो वो शुद्ध भोजन हो गया जो आपको परमात्मा की क्लोज ले जा रहा है. Thank you so much for the talk, sir. I wanted to ask about Shraddha. These days, the youngsters don't have much Shraddha. So are there any techniques to develop that, or is it something that we come into this birth? Shraddha hai ya Shraddha nahi hai? Is it like that, or can we develop it? We have the tradition of doing Sola Sanskar. We have the upbringing our child in Gurukula to raise in the environment that inspire him or her to develop this Shraddha. So tapasya is one of the technique जो हम कहते हैं tapasya word.
रेवरेंस, बिलीफ, ये पूरा इकोसिस्टम और अपब्रिंगिंग का ही कंट्रीब्यूशन होगा। किस फैमिली में जन्म लिया है, क्या एजुकेशन ले रहा है, व्हाट द काइंड ऑफ एजुकेशन ही इज गेटिंग। सो श्रद्धा इज ऑल अबाउट in the mental ecosystem he is or she is living. So Thank you. You have to put some restrictions to develop Shraddha. Okay. Let's like कि हम टेम्पल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं हमें मंदिर जाना चाहिए, एंड ही इज लाइक कि नहीं टेम्पल में क्यों जाऊं, है ना। बट लिटरली इफ वी ऑल विजिट टेम्पल्स तो हमें वहां पर एक एम्बियंस मिलता है कि नहीं देयर इज सम काइंड ऑफ सेरेनिटी, पीस। so that experience is like नहीं कुछ तो बात है। ओके, सो हम डिबेट्स एंड लैंग्वेजेस में उसको कन्विंस करने की ना कोशिश करें, टू जस्ट टू प्रमोट आपको करना है एक्सपीरियंस करना है डिविनिटी का। Okay, thank you so much. Ravi ji, just to say thank you very much. This was wonderful, and I love your interpretation of the Samudra Manthar. I think it is amazing and it should be more popular. जो अदिति जी बोल रही हैं कि लोगों में श्रद्धा कम है, somewhere people find it hard to sort of draw the connect from esoteric Shastra, Puran, old writing to the world that they see around them. And somewhere that line needs to be drawn from the edge of our current knowledge. Wahan se kheench kar it has to go till a place that, to a newer place or an older place as it were. Thank you very much. Welcome.